Namaste. Welcome back to my YouTube channel eEducator. As you know that, chapter number 7, Post-Independence India, Standard 9, subject Social Science. So we discuss about the textbook exercise. So still, if you have not subscribed the channel, subscribe and see the playlist of our channel where you can find other chapters videos. Other chapter videos are already uploaded. Let's start discussions. Okay. So before writing answers in a notebook, you make sure that you write the answer of point wise. और हैंडराइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन कि हैंडराइटिंग अच्छे होना चाहिए और जो आंसर आप लिख रहे हो वो आंसर को आपको पॉइंट वाइज लिखना है, नहीं कि पैराग्राफ के। अभी सेम आंसर आप एग्जाम के अंदर भी यही पॉइंट वाइज आप आंसर लिखेंगे। सो इफ यू हैव क्वेरीज रिलेटेड टू द एनी आंसर यू कैन सेंड मी इन अ कमेंट बॉक्स। आई विल आंसर योर queries. So let's start the discussions of exercise. Okay, standard 9, chapter number 7. Explain a brief about the merger of princely states. How a princely state, 562 princely state was there. How these were merged with the Indian Union. Okay, so after gaining independence, a king and nawabs of 562 princely states. So in India, there were 562 princely states. So after gaining independence लेने के बाद that to join the Union of India. उसको Indian Union के साथ merge करना जरूरी था. So Sardar Vallabhbhai Patel appealed to kings to join Indian Union. Sardar Vallabhbhai Patel, अपील मतलब वो उन्होंने बोला जितने भी 562 princely state थे to join Indian Union in the interest of independence of India. So one of the first king Maharaja of Bhavnagar Krishna Kumar Singh, Maharaja of Bhavnagar के जो राजा थे महाराजा कृष्ण कुमार सिंह, who started a responsible government in Bhavnagar 15 January 1948. He started one responsible government. He prepared himself to merge the Bhavnagar state into the Indian Union. So 15 January 1948, and Bhavnagar state was merged with the Union Saurashtra state with efforts of Sardar Patel in 15th February 1948. That's Bhavnagar जो state था कृष्ण कुमार राजा ने, he was the first king to donate his state to इंडियन यूनियन के लिए उन्होंने जो अपना स्टेट डोनेट किया 15 फरवरी 1948 भावनगर स्टेट को यूनाइटेड सौराष्ट्र के अंदर वो मर्ज कर दिया गया. Now to stimulate nationalisms in the kings and nawabs, okay, stimulated national king and nawabs के अंदर को nationalism create करने के लिए Sardar Patel appealed to kings that should voluntarily forsake their respective states in their interest of the Union. So to stimulate a nationalism among kings and nawabs, Sardar Vallabhbhai Patel, Sardar Vallabhbhai Patel जो थे उन्होंने they stimulated nationalism and they said that kings and nawabs you voluntarily to give up their respective states in the interest of Union of India and interest of independence of India. So next point, Sardar Patel mentions by merging almost all princely states into Union of India that kings should contributed in the making of a strong, integrated and prosperous India. So Sardar Patel mentioned that almost 559 जो स्टेट थे वो मर्ज हो गए थे. तीन ही स्टेट बचे, जम्मू कश्मीर था, हैदराबाद था और जूनागढ़ स्टेट बच गए थे. ऑल द जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको कन्विंस किया और सबको मर्ज करवाया. So in the Union of India, and the king should contributed in making of. So he suggested that king should voluntarily forsake their states of princely state in the make a strong, integrated and prosperous India. He assured them to protect the rights and interests there. So Sardar Vallabhbhai Patel assured to protect the rights of a prince and prince जो थे राजा थे उसके rights को protect करने के लिए उन्होंने assurity दी थी. Sardar Patel and his secretary home departments का जो secretary था सरदार वल्लभभाई पटेल जो home minister थे इंडिया के, and उसके जो secretary थे home minister के जो secretary थे Mr. VP Menon, they prepared a draft of attachment bond. So उन्होंने एक draft prepare किया था to merge princely state into the Indian Union के साथ merge करने के लिए attachment bond and status quo agreement. Status quo agreement it provide a status to the king. king की जो property थी उसके पास जो थी वो status उनके पास रहेगा और अपना जो state था वो Indian Union के अंदर वो merge कर देंगे. उसके लिए उन्होंने दो draft किए, attachment bond and status quo agreement. Attachment bonds the
जो प्रिंसली स्टेट थे वो अपना जो स्टेट है वो इंडियन यूनियन के लिए डोनेट कर रहे हैं, उसके लिए अटैचमेंट बॉन्ड बनाया गया। एंड स्टेटस को अग्रीमेंट इट प्रोवाइड एश्योरेंस टू द किंग्स एंड नवाब टू प्रोवाइड देयर प्रॉपर्टीज द स्टेटस और रिमेन द सेम, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, उसके लिए स्टेटस को अग्रीमेंट एक साइन करवाया गया राजाओं के साथ। एंड किंग्स वर हैप्पी बाय दिस ड्राफ्ट, जो भी ड्राफ्ट बनाया उससे वो हैप्पी थे। एंड 559 ने तो आराम से वो कर दिया। So except Kashmir, Hyderabad and Junagadh 559 princely state accepted this instrument of accession and joined the Union of India. Question 2, discuss in a brief about how are the states of Junagadh and Hyderabad merged in the Union United of India. So इंडिया के अंदर जो 3 स्टेट बच गए थे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, उसमें जूनागढ़ और हैदराबाद को कैसे मर्ज किया गया। 2 क्वेश्चन है, तो ये आंसर थोड़ा आपके लिए लॉन्ग होगा। पहले हम जूनागढ़ के बारे में देखेंगे, बाद में हैदराबाद के बारे में देखेंगे। तो पहले हैदराबाद है सर यहाँ पर, बाद में जूनागढ़ होगा। सो दैट हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th ऑफ अगस्त। तो हैदराबाद का जो निजाम था, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया कि मैं इंडियन यूनियन के साथ भी मर्ज नहीं होना चाहता। उसका उसकी इच्छा थी कि ही वांट टू जॉइन पाकिस्तान। पाकिस्तान जो बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल लिमिटेड, बिकॉज जियोग्राफिकल लिमिटेशन की वजह से जो निजाम थे वो पाकिस्तान के अंदर ज्वाइन नहीं हो सकते थे। सो दैट ही डिक्लेयर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त। उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया कि मैं पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा, इंडिया में नहीं जाऊंगा, इंडिपेंडेंट रहूंगा। सो एज फार एज जियोग्राफिकल लोकेशन इट वुड बाउंड टू बी ज्वाइन इंडिया। जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो इट शुड बी ज्वाइन इन इंडियन यूनियन। इंडियन टेरिटरी के अंदर ही होना चाहिए, वो पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। अगर होगा तो फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। So, but the fact was brought to the notice that Hyderabad won't be able to remain as an independent state as it is surrounded by the Indian territories. So, Hyderabad is surrounded, it was surrounded with the Indian territories. उसके आजू बाजू जितने भी territories थी, it was the Indian territories. So, that thought that India के हित में यही था कि हैदराबाद इंडिया के साथ मर्ज हो जाए। हैदराबाद का जो निजाम था उसको पाकिस्तान में ज्वाइन होना था, और जियोग्राफिकल लिमिटेशन की वजह से वो ज्वाइन नहीं हो सकता वहां पर, तो उन्होंने अब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। Due to the geographical reasons, they would not be able to join Pakistan. Because of a geographical reason, not be able to join Pakistan. Hyderabad कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ पे, वो okay? And they would be not able to join Indian Union because of ideological reason. उसके विचार ऐसे थे कि I don't want to join the Indian Union, so he declared them independent. So under such circumstances, they would prefer to remain independent. So in these situations, they declared their independence. Sardar Patel bluntly stated, okay, Sardar Vallabhbhai Patel bluntly stated, directly stated to the negotiators और जो निजाम थे उसके negotiators, उसने डायरेक्टली उसको बोला, people of Hyderabad are eager to be with the Union of India. So हैदराबाद के जो लोग थे, the citizens, those who are living into the Hyderabad, they were eagerly want to join with the Union of India. निजाम का एक ही डिसीजन था कि वो पाकिस्तान के, मतलब वो इंडिपेंडेंट उन्होंने डिक्लेयर किया था, पाकिस्तान ज्वाइन करना था लेकिन वो तो हो नहीं सकता था, पॉसिबल नहीं था। So meanwhile, Nizam officers started committing atrocities और people of हैदराबाद के ऊपर उन्होंने atrocities शुरू किया, अत्याचार करना शुरू किया उसके ऊपर। निजाम के लोग थे, उन्होंने बाद में forcefully, ultimately Hyderabad was merged with the Union of India by using a police force. पुलिस फोर्स का यूज किया गया, okay? निजाम के सामने पुलिस फोर्स का यूज किया, और 18 सितंबर 1948 को निजाम ने सरेंडर किया और हैदराबाद को इंडियन टेरिटरीज के अंदर मर्ज किया। उसके अंदर कन्हैयालाल मुंशी played a very crucial role in the entire episode. Now Junagadh को कैसे मर्ज किया गया? On 15 August 1947, the Nawab of Junagadh wrote instrument of accession to the Pakistan. So 15 August 1947, जुनागढ़ का जो नवाब था, he declare, उन्होंने एक लेटर लिखा किसको, पाकिस्तान को लेटर लिखा कि I want to join with the Pakistan. जुनागढ़ पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहता था। वहां पर भी थोड़ा जियोग्राफी का इश्यू था कि अरेबियन सी था, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता था। So Pakistan in turns gave them consent. Pakistan in the answer he also gave a consent, मतलब उन्होंने परमिशन दी कि जूनागढ़ आराम से पाकिस्तान के अंदर ज्वाइन हो सकता है। तो सरदार पटेल डिसाइडेड टू टेक काउंटर मेजर्स अगेंस्ट, जूनागढ़ चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी इंडिया के लिए। तो सरदार पटेल डिसाइडेड टू टेक द काउंटर मेजर्स, काउंटर स्टेप अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ नवाब ऑफ जूनागढ़।
सो पीपल ऑफ जूनागढ़ लिविंग इन मुंबई एस्टैब्लिश आरजी हुकूमत, एक फोर्स की शुरुआत करते हैं मुंबई के अंदर। जो जूनागढ़ के लोग मुंबई के अंदर रहते थे, पुलिस फोर्स का शुरुआत करते हैं। आरजी हुकूमत एक ओके बनाते, ऑर्गेनाइजेशन बनाते जिसको ओके जूनागढ़ को इंडिया के साथ मर्ज किया जाए। आरजी हुकूमत इन मुंबई एंड ड्यूरिंग दिस टाइम शेख ऑफ मैंगलोर, जूनागढ़ के बाजू में मैंगलोर स्टेट था, मानावदर था, दे डिक्लेयर दैट विश टू जॉइन यूनियन ऑफ इंडिया। एंड उन्होंने डिक्लेयर किया कि शेख ऑफ मैंगलोर और मानावदर के जो थे, दे डिक्लेयर कि वी विश टू जॉइन यूनियन ऑफ इंडिया। और जूनागढ़ का एक नवाब था जो तो पाकिस्तान जाना था। तो नाउ टू प्रोटेक्ट द जूनागढ़, जूनागढ़ को बचाने के लिए इंडियन नेवी एंड इंडियन सोल्जर्स एंड नेवी हु वर पोजीशन टू प्रोटेक्ट द मानावदर, मैंगलोर को प्रोटेक्ट करने के लिए इवन दे बीसीड द जूनागढ़, जूनागढ़ को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया आर्मी और नेवी ने। तो नवाब ऑफ जूनागढ़ फ्ले टू द पाकिस्तान। बाद में नवाब जूनागढ़ का जो नवाब था, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो ही फ्ले टू द पाकिस्तान, वो पाकिस्तान चला गया। So on 9th of November 1947, referendum of people of Junagadh was taken. Referendum public vote, okay, public vote में लोगों के साथ वोटिंग किया गया कि कितने लोग जूनागढ़ के अंदर रहना चाहते हैं, and with the full majority, Junagadh was merged with the Union of India. So Junagadh merger with the Union of India with Sardar Patel guts and tremendous will of Junagadh, okay, people of Junagadh, के पीपल ऑफ जूनागढ़ के लोग थे, उसकी भी इच्छा थी कि हम इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हुए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो गट्स था, कि पावर था, कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था कि जूनागढ़ को हम मर्ज करेंगे, उसकी वजह से जूनागढ़ आज मर्ज हो गया। थर्ड नंबर, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मर्जर ऑफ गोवा, दीव, दमन इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो दीव दमन जो पोर्टुगीज टेरिटरी थी, वो कैसे मर्ज की गई इंडियन यूनियन के साथ। तो 15 अगस्त 1947 पॉलिटिकल लीडर्स एंड सत्याग्रहीज एंटर दीव दमन इन गोवा, गोवा को जो पोर्टुगीज के पावर से बचाने के लिए इंडियन यूनियन के अंदर मर्ज करने के लिए। So the free Goa agitation, this movement was started in Goa to liberate the Goa, and 1,000 volunteers would enter and started agitations, and 1,000 volunteers also died in the free Goa agitation. So as a सत्याग्रह proved to be unsuccessful, जो agitation शुरू किया था, सत्याग्रह शुरू किया था गोवा को फ्री करने के लिए, it was unsuccessful. So even atrocities of a Portuguese government were increased. Atrocity जो गोवा के अंदर जो लोग रहते थे, उसके ऊपर atrocities अत्याचार करना शुरू किया उनके। So atrocities of a Portuguese government increased on the people, those who were living in this Portuguese territories. Now what Indian government decided to begin Operation Vijay to liberate the Goa, to take the freedoms from the Portuguese. Portuguese के अंदर से ये गोवा को फ्रीडम दिलाने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया। मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। इट वाज ऑपरेशन विजय दैट टू लॉन्च टू लिबरेट द गोवा, गोवा को फ्रीडम देने के लिए पोर्टुगीज के अंदर से दिस वाज स्टार्टेड। So on the midnight of December 19th, Governor of Portugal, this was surrendered to the Indian government. So in the midnight of December 19 को शुरू किया, मॉर्निंग हुआ तो ये सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन विजय। मॉर्निंग के अंदर गवर्नर जो थे पोर्टुगल के डिसल्वा थे, उन्होंने सरेंडर किया टू द इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन आर्मी कैप्चर गोवा, दमन, दीव एंड होस्टेड द इंडियन फ्लैग। वहां पर पोर्टुगीज का जो फ्लैग था, वहां पर इंडियन फ्लैग उन्होंने फ्लोर किया। and thus last remains of a western rule disappear from India. तो धीरे उसके देखा जाए कि पोर्टुगीज 1900 पोर्टुगीज को इंडिया के अंदर आया था 1498 के अंदर, जो वास्को द गामा आया था टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया। एंड बाद में जो पोर्टुगीज 1900 देखा जाए तो 1961 के अंदर 62 के अंदर दे लेफ्ट द टेरिटरीज ऑफ इंडियन टेरिटरी। सो दैट्स लास्ट भी इन वेस्टर्न ऑफ डिसअपियर। सो सबसे पहले वाले आने वाले भी पोर्टुगीज थे, लास्ट में पोर्टुगीज ही छोड़ के गए। So that on March 12, 1962, Goa, Dadar Nagar Haveli, Daman and Diu, they were merged with the Union of India. 1962 के अंदर पोर्टुगीज छोड़ के चले गए। So this state were known as a Union territories, presently known as a Union territories. Okay, गोवा को स्टेट बनाया गया है। So 13th May 1987, Daman and Diu were separated from Goa, and thereafter Silvassa was made the capital of Dadar Nagar Haveli, Daman was made the capital of Diu, Daman, and Panji was the capital of Goa. Okay, presently Goa is considered as a state here. Answer the following questions in a brief. Okay, which appeal did Sardar Patel make to interrogate a principal state in the Union of India? What Sardar Vallabhbhai stated
टू मर्ज प्रिंसली स्टेट जो थे उसको इंडियन यूनियन के साथ मर्ज करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था? So there were 562 princely states at the time of independence. इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम में 562 प्रिंसली स्टेट्स थे. आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसको होम मिनिस्टर भी उनके पास दिया गया था. सो होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपील टू किंग्स एंड नवाब्स of a princely state that they should voluntarily forsake the respective state in the union of India. So it stated that you voluntarily give up your state and voluntarily give this your state or princely state in the merger of a union. Voluntarily आपको अपना state है वो merge कर देना चाहिए, declaration देना चाहिए. The stimulations stimulated nationalism. Sardar Vallabhbhai Patel stimulated instigated a nationalism. Even kings, rajwadas and nawabs contributed in the making a strong, integrated and prosperous India. So बनाने के लिए जितने भी नवाब से, रजवाड़ा से, ठीक है, जो प्रिंस थे, उन्होंने अपना डोनेट किया, अपना स्टेट को डोनेट किया. सरदार पटेल assured them to protect the rights and interests. Second number, why was there a necessity to use a police force in Hyderabad? इस हैदराबाद के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था, हैदराबाद को कैसे मर्ज किया, वही क्वेश्चन के आंसर में सेम टू सेम यहाँ पर वही आपको सेम टू आंसर मिलेगा. So due to the geographical reasons, Hyderabad would not be able to join Pakistan and they would not be able to join India owing to the ideological reason. So उसका आइडियोलॉजी ऐसी थी कि हम पाकिस्तान के अंदर ज्वाइन करना था और जियोग्राफी की वजह से पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं कर सकते थे. So under such circumstances, they would prefer to remain independent. Such situations, they cannot connect with the Pakistan because of geographical reason and because of ideology, they were not able to join with the India. So they, in such circumstances, what they declared independence. Sardar Patel bluntly stated to the negotiator of Nizams and the people of Hyderabad are eager to be with the Union of India. Meanwhile, Nizam's officers started committing atrocities on the people of Hyderabad, and ultimately Hyderabad was merged with the Union of India by using a police force 18 September 1948 and Nizam surrendered it. Third number, why did the French government agree to relinquish their Indian settlement? Relinquish means give up. फ्रेंच गवर्नमेंट क्यों रेडी हो गए इसका जो टेरिटरी था देने के लिए? ब्रिटिशर 1947 के अंदर चले गए. ब्रिटिशर हु लेफ्ट द कंट्री 1947 इंडिपेंडेंस दिया, 1948 में सब कुछ लेकर चले गए थे. बाद में तो फ्रेंच पोर्टुगीज टेरिटरी तो इंडिया के अंदर थी. पोर्टुगीज जो आए थे 1498 के अंदर, वास्को द गामा आए, उसके बाद फ्रेंच, डच, वो सब कुछ आए थे. जो ब्रिटिशर चले गए, फ्रेंच एंड पोर्टुगीज स्टिल वाज रूलिंग ओवर इंडिया. ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में देखे कि पोर्टुगीज तो 1962 के अंदर गए, फ्रेंच 1954 के अंदर गए. तो फ्रेंच क्यों रेडी हो गए? So people of French colonies wanted to desperately to join a Union of India. जो फ्रेंच की जो कॉलोनीज थी उसके अंदर जो लोग रहते थे, फ्रेंच जो वहां के जो लोग थे, they want to join Union of India and they started a vigorous movement for the purpose. So they started a strong agitations in French territories. French territories के अंदर जो लोग थे, they started agitations to merge the French into the French territories into the Union of India. So vigorous movement was started in the French territories. And the French tried to suppress this freedom movement, and whatever the freedom movement was started, agitation started, French tried to suppress, to stop this movement. So in a mammoth meeting organized in Pondicherry ke andar a huge meeting was organized regarding this, giving a powers to the independence of India. People gave the French government a Hind Chodo slogan in 1948. They given ultimatum to leave the countries. Hind Chodo slogan in 1948 to the French government. The Indian government started a negotiation for the peaceful solution. The peaceful solution की शुरुआत की कि फ्रेंच के साथ solution किया जाए और फ्रेंच टेरिटरी की भी इंडिया के साथ मर्ज की जाए. So issue with the French government, and so in Yanam People's Liberated Army, Yanam के अंदर liberation army जो था, they taken over the administration. Yanam का जो administration था जो फ्रेंच के अंडर में था, वो वहाँ के लिबरेशन आर्मी ने ले लिया इन देयर हैंड्स इन जून 1954 के अंदर. And the French government realized the people anger and was compelled to start negotiation with the Indian government. So 1954 के सिचुएशन के बाद
Okay, the French government को ऐसा लगा कि now we are not able to control over this Indian territories, and they started negotiation with the Indian government. Thus, all the French colonies were handed over to the India for further reconciliations, and further they were taken under the Union territories of Pondicherry. So Pondicherry is headquarter, Mahe, Karaikal, Yanam, this also considered as a French territory है, तो Pondicherry के अंदर आती है. So with the reconstruction of Indian state, okay, Pondicherry, Karaikal, तो तमिलनाडु के अंदर आता है, माहे केरला के अंदर, यनम आंध्र प्रदेश, चंद्रनगर वेस्ट बंगाल के अंदर है उसका. पोंडिचेरी इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ ऑल दिस टेरिटरीज. तो अलग अलग जो टेरिटरीज है, इट कम्स अंडर द यूनियन टेरिटरीज. पोंडिचेरी उसका हेडक्वार्टर है. What is Operation Vijay? Why was it carried out? What is Operation Vijay? As a free liberation गोवा के अंदर हमने देखा कि ऑपरेशन विजय था, वही है. So on 15th August 1947, political leaders and satyagrahis entered Deep Daman in Goa के अंदर वो enter हुए. And so in free Goa agitation, thousands of volunteers died. Number of volunteers died. They started Goa agitation movement. So as attempts such as a negotiation and satyagrahas proved to be unsuccessful, whatever the attempts, negotiations was started, that was unsuccessful. So Indian government decided to begin Operation Vijay to liberate Goa. तो Indian government ने अपना Operation Vijay किया, the military operation शुरू किया to take the freedoms from Portuguese, गोवा को liberate करने के लिए. And the Indian army captured Goa, Daman and Diu with the help of Operation Vijay. So people hoisted Indian flag there on the midnight of December 19, 1961. And Portuguese governor de Silva surrendered to Indian government. And thus the last remain of Western rules disappeared from India. So Goa, Dadanagar Haveli, Daman and Diu were merged with the Union of India with the help of Operation Vijay. Question 3, short notes are here. Number 1, Sardar Patel's contribution in merger of a princely state. Already इसके पहले दो आंसर हमने देखे, उस टाइप का ही आपको एक तीसरा आंसर मिलेगा. Sardar Vallabhbhai Patel's contributions in princely state. Okay, at the time of independence, there were 562 princely states in India. It was a mammoth task to convince these kings. Okay, Sardar Vallabhbhai Patel has a strong convincing power, has a gust, and with the convincing power, they were able to convince those 559 जो थे उनको convince किया और उन्होंने Indian Union के साथ merge किया. So these kings and Nawabs, moreover, it was to be done very speedily. So Sardar Vallabhbhai Patel appealed to kings to join Indian Union. He made an appeal and he stated to the kings and Nawabs to donate their empire, their princely state for the Union of India. And Sardar Patel assured them to protect their rights and the interests of. So who was the first king? Bhavnagar state was merged with United Saurashtra state due to the efforts of Sardar Patel. So Krishna Kumar he was the first king who donated this empire. And Sardar Patel, the help of his secretary VP Menon, prepared the draft for attachment bond और status quo agreement बने हैं, जिसकी वजह से जितने भी princely state थे उसको merge किए गए. So except Kashmir, Hyderabad and Junagadh, 559 princely states accepted this instrument of accession and joined the Union of India. So on 18 September 1947, Hyderabad was merged with the Union of India by using a police force. Thus Nizam surrendered. निजाम ने surrender किया. उनके बाद 9 September 1947 नवाब ऑफ जुनागढ़ जो फ्लेड पाकिस्तान में गए थे with the public opinion के साथ उनके बाद लिया गया and later on with the majority and give opinion to merging in Indian merging in India. So उसके बाद जुनागढ़ को भी इंडिया के साथ merge किया गया. So Junagadh was merged with the Union of India due to the Patel's guts and tremendous will of a people of Junagadh. Pakistan attacked Kashmir in order to merge Kashmir with it. तो कश्मीर को भी merge करने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर war declare किया. But somehow Hari Singh Dogra जो राजा थे कश्मीर के requested a military assistance to the protect Jammu and Kashmir from Pakistan attack को protect करने के लिए. तब तक वो पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर था इंडिया के अंदर नहीं आया था. उसके बाद जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक हुआ तो मिलिट्री असिस्टेंस के लिए जो राजा थे हरि सिंह ने उन्होंने मदद ली एंड इंडियन आर्मी प्रोटेक्टेड कश्मीर विद द इमीडिएट इफेक्ट. तब तक तो उन्होंने कश्मीर वाला थोड़ा पार्ट उन्होंने कैप्चर किया था.
आज भी वो प्रॉब्लम है। जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का जो पीओके जाना जाता है वो। To explain in brief India's development in the field of science and technology. What was the development of India after the independence in field of science and technology? So India has made extraordinary achievement in the fields of science and technology. Many engineers, scientists, technocrats who had contributed remarkably in the field of science and technology. So many engineers was there, scientists there, technocrats was there. So they contributed remarkably in the field of science and technology. Indian institution, so Indian Institute of Science, Indian Institute of Science, Indian Institute of Technology, Indian Space Research Organization, Physical Research Laboratory are glorious example for this. These are some of the institutions which are working for the development of science and technology in India. So we have been making a use of a modern agriculture technology with the green revolutions to increase agriculture productions for the country. So we have been able to achieve grand revolutions. Use of a technology, use of insecticide, pesticide and production has been increased, which term as a grand revolution. India has established research institution, the research institute established की है, laboratories बनाई गई है for the peaceful purpose, for the nuclear power plant भी हमने यहाँ पर establish की है कि nuclear weapon बनाने के लिए भी हमने शुरुआत की है. Nuclear scientists and engineers have constructed ultra-modern nuclear reactor and power station for a peaceful use of a nuclear energy. So we have developed the space shuttles, geosynchronous satellite launch vehicle, GSLV, polar synchronized, polar vehicle जो है PSLV भी है, polar satellite launch vehicle जो आता है वो भी हमने बनाया, PSLV है, GSLV है, these are the जो है vehicle hai, which carries the satellites into the space. So the launch vehicle which carries satellites into the outer space. GSLV, special PSLV, these are the successfully are working presently. ISRO played a role in this movement. ISRO ने इसके अंदर अच्छा role play किया है. And we have made significant progress in the field of telecommunications and information technology through the computer, internet. So through the computer we are using internet, mobile, smartphones, telecommunications के अंदर बहुत सारा प्रोग्रेस किया है हमने. The programs of Digital India, Make in India की शुरुआत हुई है. Digital India, Make in India production India के अंदर बनाया जाए to become a world famous. And 21st June has been declared as a World Yoga Day by the United Nations, which show that development in the health sector. So that after the independence we have developed much in the various sectors. Green revolutions in a agriculture sector. So independent India was not self-reliant in the productions of a food grain. So food grain जो था, so food grain था, independent के time हम दूसरी country से import करते, special Russia से मंगवाते थे. Okay, that in making us a self-reliant in area, like a huge dams has been constructed, lakes has been constructed, canals have played a major role, and we have been making a use of a modern agriculture technology to increase agriculture products of production for the country. So use of a modern technology, modern farm implement has been used. Even fertilizers started, chemical fertilizers has been used there. Even biotechnology modified seeds has been used in that, and that we were able to make enough production in our country. And farmer use improves quality seeds, chemical fertilizer, pesticides, and modern agriculture tools. And agriculture facilities have been increased in the field of irrigation. So even number of technology, different technologies has been used in a field of irrigations. And agricultural institutions, laboratories, and agriculture universities. So for research के लिए, for research, agriculture institution has been set up, laboratories has been set up for testing of soil, seeds के testing के लिए, agriculture universities की शुरुआत हो गई, have been established to achieve growth and agriculture science. So thus above all reforms led to the green revolution. Regionalisms, has been, so it's a India has unity in a diversity. Unity in diversity in a various way. Our country is a diverse number of people who live, number of religions, people who live in India. So India has a unity and diversity. Still, India is united with having a number of diversity.
No other country in the world has such a diversity in India, in diversity in terms of a language, religious, custom, ritual, wear, festival, their clothes, the kind of shelters they live. So no other country in the world such a diversity in India has. The people who created and instigate regionalisms are harmful elements for national unities, and there are a number of people, generally political leaders are there, they instigate regionalism को अपने रीजन को एक अच्छा बताते हैं दूसरे रीजन से लिए, so these are the harmful for the unity and for the integrities of a country. So after achieving independence, country should come first instead of a state. Instead of a development of a one region, we should give a priority for the development of a country, not a one particular region or one particular state. We should always work for the for the countries here, for India. So language, caste and regions are the three major main important factors which creating a regionalism. Language, caste and religion, these are the factors which cause main factors which cause regionalism. Language, how language affects on regionalism. Language stimulate regionalism, like North India Hindi speaking, while South India non-Hindi speaking speakers demand new regions according to the language. There are a number of states which has been formed on the base of their languages. Language के हिसाब से बहुत सारे अलग-अलग region का formation हुआ है, state का formation हुआ है. So that state reorganization commission, already state reorganization जो commission था, जो independence के बाद बनाया गया, state को reorganize करने के लिए the implement recommendation of divisions of regions as per the linguistic barrier. linguistic barrier के हिसाब से उन्होंने already अलग-अलग state बनाए हैं on the basis of languages. Still presently, still the demand is going for the to frame the new states or region on the basis of languages. Caste and religions, people belong to the different religions live in India. Superiority of one particular religion exists in certain regions. Okay, we found a number of religions people who live in India, but may also have the one religious majority is in one region. कोई एक region के अंदर आपको एक religious की majority ज़्यादा दिखेगी, वही religious दूसरी जगह पर आपको कम दिखेंगे. So for example, like in Nagaland, Mizoram, Manipur and Arunachal Pradesh have a different customs, they have different traditions, lifestyles, and their professions are totally different. Like a border people in Assam, Assam के अंदर जो border tribe है, have been demanding, वहाँ के जो लोग हैं, they are demanding different regions. Therefore stormy movement, बहुत बार वहाँ पर movement होता है, border region, border land का वो demand कर रहे हैं. असम के अंदर से नया state बनाना चाहते हैं. So currently the demand of a separate Vidarbha region of a Maharashtra has been going. Marathawada और Vidarbha region जो बोला जाता है, जो एरिया है जो मुंबई से फार अवे रीजन जो आता है, जो बॉर्डर छत्तीसगढ़ वाला बॉर्डर वो सब कुछ बॉर्डर है महाराष्ट्र के रिलेटेड, एमपी से जो बॉर्डर लगती है वो वाला मराठावाड़ा और विदर्भ रीजन बोला जाता है. द पीपल दोज हु आर लिविंग देयर, दे आर डिमांडिंग फॉर द न्यू स्टेट. So it is not in the interest of our nations. We should always look about the unities of a country should be more important than demands of a one particular region. Regional inequality. So there are number of regions, number of states which are unequal here. So the foreign rulers did not undertake development activities in the place where they would not get economic profit. So foreign जो भी पोर्टुगीज से ब्रिटिशर से ज़्यादातर ब्रिटिश ने रूल किया, so they did not develop those regions which they did not get a benefit. जहाँ पर उसको benefit नहीं होता था वो एरिया उन्होंने डेवलप नहीं किया. तो इंडिपेंडेंस के बाद भी वो एरिया अंडर डेवलप रह गए, तो पहले से डेवलप थे तो आगे जाने वाले थे. तो that as a result there was a regional inequality in such places. So after independence the planning commission has been formed. planning commission बनाया गया कि जो region less developed है उसको कैसे develop किया जाए, उसके हिसाब से planning commission को सेटअप किया गया. फॉर्म द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. डेवलपमेंट इंडिया के अंदर सही तरह से हो, इसके प्लानिंग कमीशन और इसको पॉलिसी कमीशन भी बोला जाता है. आज उसको हम नीति आयोग से जानते हैं. सो वन ऑफ इट्स मेन एम वाज दैट बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ अ डिफरेंट रीजन. बैलेंस डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन जो था कि पॉलिसी कमीशन था, द मेन एम्स टू मेक अ बैलेंस डेवलपमेंट, टू मेक अ बैलेंस डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द रीजन्स. So in fact, due to the regional pressures, certain political regions, because of some tug of war between two religious, between two political parties, two politicians there, so take development programs to their own region. बहुत सारे जो politician होते,
ओके, मे बी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है। ओके, इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपना एरिया पहले डेवलप करेगा, दूसरे के एरिया को डेवलपमेंट नहीं होने देगा, ऐसा हो सकता है। तो देयरफॉर रीजनल इनइक्वालिटी इज सीन इन द मैटर ऑफ इक्वल डेवलपमेंट। resources of development, look, resources, all the resources are not available everywhere. Even grants given to the factors of regional inequality, grants जो government provide grants to develop some region, वो भी unequal थोड़ा सा हो सकता है। Even within the developed, moderately developed and less developed states, internal inequality exists in country. Look, there are number of states that are well developed, बहुत सारे डेवलप अच्छे स्टेट है जो डेवलप है, अंडर डेवलप भी है बहुत सारे। लाइक महाराष्ट्र इज इन कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट। महाराष्ट्र इकोनॉमिकली डेवलप आता है, मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, बट इस रीजनल लाइक विदर्भ, मराठा वाला जो एरिया है, विदर्भ एरिया है, दो लेस डेवलप है, बैकवर्ड एरिया है, वो इतना डेवलप नहीं है। So some regions are ahead in agriculture development, while some region in industrial development. Agriculture like Punjab, Haryana, आप देखो agriculture development के अंदर है, गुजरात देखो industrial development के अंदर आगे। So the regional inequalities and narrow-mindedness is tremendous harmful for the unities of countries. Okay, this is the exercise. Now, objectives are here. So after getting independence, who became the home ministers of India? We know who became the home minister of India after getting independence. Sardar Vallabhbhai Patel. Which of the following territory is not a union territory? इसमें union territory कौन सी नहीं है? हिमाचल प्रदेश. Okay. Currently, how many states in the union? Okay, Indian Union are existence 28 states. So first C, second B, and third C. Okay, fourth number, in which year 2014, which in the year 2014 which state separate? आंध्र प्रदेश के अंदर से कौन सा स्टेट बना? तेलंगाना। झारखंड स्टेट was separated from which state? झारखंड कौन से स्टेट से बना है? झारखंड was separated from बिहार। From the below given state, which state does not belong to seven sisters? सेवन सिस्टर ईस्टर्न स्टेट है, उसको सेवन सिस्टर बोला जाता है। उसमें कौन नहीं आता है? उत्तराखंड एंड झारखंड उसमें नहीं आएगा। So fourth C, fifth D, and sixth D option. One of more three here. So from the below given states, which state is included in union territories? Okay, which state is included in union territories के अंदर क्या आता है? पुडुचेरी union territories के अंदर आती है। So when is the foundation day of गुजरात? गुजरात का फाउंडेशन जो मुंबई स्टेट से अलग बना 1st May 1900 okay, 1st May 1960, 1st May 1960. 9 number, after India got independence, which commission was formed for social and economic development? That was formed as a planning commission, जिसको आज हम नीति आयोग से जानते हैं। 7C, 8B, and 9th, that C answer. Okay, this is the exercise of lesson number 7. Hope you like this video, and still if you have not subscribed, subscribe the channels and share this video with your friends. Okay, still if you have any queries, send me in the comment box. I will reply your queries. Thank you.